Hello everyone, welcome to Concepts in Chemistry YouTube channel. So today in this video we will discuss some questions from radioactivity chapter. So हम सब लोगों को पता है बार्क 2022 एग्जाम फर्स्ट फेज 2 अप्रैल को होगा एंड सेकेंड फेज फॉर केमिस्ट्री और केमिस्ट्री. सो फर्स्ट फेज फॉर केमिस्ट्री 2 अप्रैल को होगा एंड सेकेंड फेज फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो 6 अप्रैल को होगा. सो हम सभी को पता है जो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से बार्क एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं. सो more than 10 questions from radioactivity chapter normally asked in BARC exam. So that's why we thought that before exam, if we practice some questions from radioactivity chapter, so उस radioactivity question कर लेते हैं. So ये by practicing this some questions from radioactivity हम लोगों का कुछ radioactivity chapter का कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा और थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. So before going to the first question, so the main formula, the main we can say the main law of the radioactivity chapter. Just we have to keep in mind one law that is called Soddy-Fazan's group displacement law. So ये law हम सभी को याद होना चाहिए. Soddy-Fazan's group displacement law. अगर ये लॉ हम लोगों को याद रहेगा हमेशा, सो हम लोग रेडियोएक्टिविटी चैप्टर नॉर्मली द एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. So we have to keep in mind that law, only this law, that is called Soddy-Fazan's group displacement law. So what this law says normally, so when an alpha particle is emitted by an element, alpha particle means that's helium, mass number 4, atomic number 2. So its mass and atomic number will be decreased by 4. So alpha particle means helium, that's mass is 4 and atomic number is 2. So when an element emit alpha particle, then its mass number decreased by 4 unit and atomic number decreased by 2 units. That is the first statement of Soddy-Fazan's group displacement law. अगर ये लॉ आप लोगों को हमेशा याद रहते हैं तो एमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मुझे लगता है प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व करने से. आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर ये लॉ आपको याद रहता है हमेशा. एंड द सेकंड स्टेटमेंट, सेम लॉ, Soddy-Fazan's group displacement law. Second statement, when a beta particle means electron. So beta particle electron charge means atomic number -1 and mass number 0. So when a beta particle is emitted by an element, its mass number will remain same because beta particle is equivalent to electron. Electron mass is 0. So electron mass number is 0. So electron's mass number is 0. So beta particle is equivalent to electron and electron mass number is 0. So not mass, it is mass number, not the weight. This is mass number A. So is emitted by an element, its mass number will remain same because we know electron minus on E minus on 0. So mass number 0, that's why mass number remains same. And since this Z value is on, electron Z value or you can say charge is -1, that's why its atomic number increased by 1 unit. So when a particle emit beta particle means electron, then this is beta particle, his mass number is 0. Then if a particle emits beta particle in the product, there is no change, there will be no change in mass number since the charge or Z value of beta particle is -1 and a particle emit this means release this particle, then in the product, in the atomic number +1 should be added, means atomic number will increase by 1 unit. So its emit alpha particle means helium,
So from A, mass number of X emits alpha particle means helium. So mass number decreased by 4. That's why we wrote here A minus 4, and atomic number decreased by 2 units. So Z minus 2. In the product, the atomic number will be Z minus 2. In this case, no change in mass number, so A will be same. But since it releases minus 1, you can say Z releases minus 1. So in the product, release of minus 1 means we can say addition of plus 1. So in the product, Z plus 1 we have to write for beta particle emission. So for alpha particle emissions, the mass number decreased by 4 unit and atomic number decreased by 2 unit. For beta particle emissions, the mass number remains same in the product, and the atomic number will increase by 1 unit. So this is the Shorty-Fason's group displacement law. So let's now move to the questions. So this is the first question. So if it is assumed that this is somewhat tricky question, so this is not normal questions from that group displacement law. So this is somewhat tricky and some conceptual questions. So let's see. So if it is assumed that uranium 92-235 decays by emitting only alpha and beta particle, then the possible product of the decay is. So in the question it is given that uranium 92-235 isotope decays by emitting only alpha and beta particle. There is no mention. इन लोगों ने ये मेंशन नहीं किया कितना अल्फा कितना बीटा पार्टिकल ये एमिट करते हैं, बट मेंशन यही किया है जो ये आइसोटोप है यूरेनियम 92-235, ये ओनली अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं. सो व्हाट इज द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द डीकेज? सी इन द एवरी ऑप्शंस A, B, C, D, the mass number is 89. In every case, the mass number is 89. So we have to find the number of alpha and beta particle in a way. हम लोगों को अल्फा एंड बीटा पार्टिकल ढूंढना है कितना अल्फा एंड कितना बीटा पार्टिकल अगर ये एमिट करते हैं ये यूरेनियम, देन 89 मास नंबर हम लोगों को मिलेगा. So we have to find the number of alpha and beta particles emitted by uranium so that the mass number will become 89. In the questions only, in the questions ये लोग mention किया, in the questions it's mentioned that it's decays only alpha and beta particles, not only alpha, not only beta, alpha and beta particles, but the number of alpha and beta particle is not there. So we have to find the number of alpha and beta particles, so that first we have to find how many alpha and beta particle if it emits, then the atomic number of the product become 89. Let's see. This is somewhat a tricky question. So this is the isotope. So first we assume that if it's emit one alpha and one beta particle, so if uranium 92-235 emits one alpha and one beta particle, then what will be the mass number in the product? So one alpha particle emits means mass number decrease by 4 unit. So mass number decrease by 4 unit, and if it release one beta particle, there is no change in mass number. That's why one alpha particle emit यूरेनियम वन अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं, सो मास नंबर में चेंज होगा -4. इन द प्रोडक्ट मास नंबर -4 डिक्रीज हो जाएगा. एंड इट ऑल्सो एमिट ऑन बीटा पार्टिकल, then there is no change, there will be no change in mass number. That's why I wrote here 0. So overall mass change is 4. So in the product, if this isotope emits one alpha and one beta particle, then overall mass change in the product will be 4. So in the product, mass will decrease by 4 units. I mean atomic number, we all know if on isotope on element here 92-235, if emit alpha particle, then atomic number is decreased by -2. Also it emits a beta particle, and in that case the atomic number will increase by 1 unit. That's why I wrote here -2 for one alpha particle, +1 for beta particle. So in the product,
the atomic number should be the atomic number in the product, the atomic number should be decreased by overall atomic number decreased by 1 unit. So if uranium 9235 emits 1 alpha 1 beta particle, then in the product in the product the mass number, overall mass decreased by 4 unit, we see here. So it's become 231, and in the mass number, in the atomic number, it becomes less than 1, means 91. So in the product there is no 91 in the atomic number, so we have to find 89. So that's why we wrote a series of emission. So option 1 is not possible to get 89 as a mass number, as a atomic number. हम लोग फर्स्ट देखते हैं एटॉमिक नंबर मैच करने को कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे मास नंबर. If this element emits 2 alpha and 1 beta particle, 2 alpha particle emit करते हैं. So अगर ये 2 alpha particle emit this element अगर 2 alpha particle emit करते हैं, so प्रोडक्ट में मास नंबर का चेंज क्या होगा? So 2 alpha particle means mass number decreased by minus 4 into 2, 8 units. 1 beta particle, so there is no change in mass number for beta particle. So beta particle remain as same as in the mother nuclei. So in the product the mass number will be decreased by 8 unit since it emits 2 alpha particle. Now atomic number, it emits 2 alpha particle, means atomic number decreased by 2 into 2, 4 units. Since it emits 1 beta particle, so atomic number increased by 1 unit. So for alpha particle, atomic number decreased by 4 unit. For beta particle, for emission of beta particle, atomic number decreased by 1 unit. So overall change is 3. So if this isotope emits 2 alpha and 1 beta particle, then overall atomic number decrease is 3, means it's become 89, and overall mass number decrease is 8, so it's become 27. So it's become 27 to 27. Let's see the third possible way. If it's emit 1 alpha particle, 2 beta particle, so 1 alpha particle means mass number will decrease by 4 units and atomic number will decrease by 2 units. 2 beta particle, no change in mass number, but atomic number increased by plus 2 unit, because here 2 beta particle is 2 beta particle emission is there. So in this possible way, if this isotope emits 1 alpha particle and 2 beta particle, then in the product overall mass number decreased by 4 unit and overall atomic number decreases 0, means there is no change in atomic number. For 1 alpha particle, atomic number decreased by plus 2 unit. 2 beta particle, atomic number increased by 2 units. So this will cancel out, so no change is atomic number. So in the product 92 will be there. देख लेते हैं ऑप्शन 4 क्या शो करता है. सो इफ 2 अल्फा पार्टिकल्स एंड 2 बीटा पार्टिकल्स इमिट करते हैं ये आइसोटोप, सो प्रोडक्ट में क्या होता है? 2 अल्फा पार्टिकल इमिट अगर ये करते हैं, अगर 2 अल्फा पार्टिकल एमिशन होता है, सो मास नंबर will decrease by 4 plus 4, 8 units, and 2 beta particle there is no change in mass number, so overall change in mass number in the product 8 units, means its mass number decreased by 8 units. But see, 2 alpha particle atomic number decreased by 4 units, 2 beta particle atomic number increased by 2 units, so minus 4 plus 2,
overall change is atomic number plus 2. So in this case, in the product, the atomic number overall, overall atomic number decreased by 2 units. So it become 90, not 989. In 5 case, in case number 5, if 3 alpha and 4 beta particle, so if it's emit 3 alpha, then overall mass decreased by 12 units. And in atomic number, 3 alpha means 3 into 2 minus 6. So 6 unit decreased by atomic number decreased by 6 units for alpha emissions. For 4 beta emissions, atomic number increased by 4 units. Total change is 2. So in the product, the mass number is decreased by 12 and the uh, atomic number is decreased by 2. So if we write more other options, 4 alpha 4 beta, 5 alpha 5 beta, 3 alpha 4 beta, so we cannot find any possible matching for this combination, where we will get 89 as a uh, 89 as a hollow atomic number. So see the option 2. Option 2 is the overall change means in the option 2, if it emits 2 alpha and 1 beta particle, then the atomic number will decrease by 3 units, means it become 89. So in this case, the atomic number will match 89, since in 4 options atomic number is 89. Now see in that options, if 89, now in this case mass number will decrease by 8, so mass number become 227. So only this option 2, so the possible emission is option 2. Option 2 is the possible emission where we will get the 89 as an atomic number, and for that the corresponding change in mass number is 8. So 89 to 27. So if we decrease 8 unit from 235, we will get to 27. So there is no other options 230, 235, 230 on. So there is no other combination. You cannot find other combination. So कोई अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है जो अल्फा एंड बीटा एमिशन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन में 89 मिलेगा, बट एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिसमें 89 मिला हमको एटॉमिक नंबर. सो फॉर दैट कॉरेस्पॉन्डिंग मास नंबर वी हैव टू फाइंड. सो ये एटॉमिक नंबर 3 यूनिट डिक्रीज हो गया, सो इसमें 89 होगा. सो फॉर दैट कॉरेस्पॉन्डिंग मास नंबर चेंज वी हैव टू कंसीडर. सो इसमें 8 यूनिट मास डिक्रीज हो गया, सो 227. So in the product it will become 227. So the correct option is that if uranium 92-235 emits 2 alpha and 1 beta particle, then the product is 89 Ac227. So there is no other combination. आप लोग कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें ये करके देखना, ये 89 जो होगा मीन्स 3 यूनिट डिक्रीज होगा एटॉमिक नंबर में, और कोई अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसमें जो 2 अल्फा एंड 1 बीटा पार्टिकल एमिट होगा. सो 2 अल्फा एंड 1 बीटा एमिशन में एटॉमिक नंबर 3 यूनिट डिक्रीज होगा एंड मास नंबर 8 यूनिट डिक्रीज होगा. सो द पॉसिबल प्रोडक्ट इज B, 89 actinium-227. So now move to the second questions. So during the transformation of XCA to YDB, the number of beta particles emitted are. So this is ये क्वेश्चन देखने को थोड़ा
अलग सा लग रहा है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर फ्रॉम रेडियोएक्टिविटी. So this is just the you can say this is just the mathematical formulation of Schrödinger's group displacement law. Just the mathematical formulation of the group displacement law. So हम लोग पहले ही ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ लिया और देख लिया. नाउ ये वाला क्वेश्चन का आंसर में ये प्रूव करेंगे. सो दिस इज सो x एलिमेंट y एलिमेंट, a मास नंबर x का, b मास नंबर y का, c एटॉमिक नंबर x का, d एटॉमिक नंबर y का. सो अगर ये x से y फॉर्म होता है वाया रेडियोएक्टिव डीके, देन how many beta particle emits x? So number of beta particle emits by x you have to find. So हम लोग दोनों ही देखेंगे, number of emission of alpha particle and number of emission of beta particle. So let assume that number of alpha particle and beta particles emitted by x are small x and y. So number of alpha particle emitted by x is small x and number of beta particle emitted by x is small y. So according to the group displacement law, so this is mass of x and हम लोगों ने assume कर लिया x number alpha particle emit होता है इसमें से. So we can write a minus 4x, one alpha particle emit होने से -4 यूनिट मास नंबर डिक्रीज होता है. वन अल्फा पार्टिकल एमिट होने से मास नंबर से 4 यूनिट डिक्रीज होता है. सो x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट होने से मास नंबर से 4 into x नंबर ऑफ यूनिट डिक्रीज होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास नंबर. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है. वन अल्फा पार्टिकल एमिट होने से मास नंबर से 4 यूनिट डिक्रीज होता है. हम लोगों ने कंसीडर किया इसमें से x अल्फा पार्टिकल इमिट होता है. x का वैल्यू 2 3 4 5 में हो सकता है. सो अगर 5 होगा, सो 5 अल्फा पार्टिकल इमिट होने से 5 into 4, दैट्स व्हाई आई राइट हियर 4 into x मास नंबर डिक्रीज होगा. अगर इसका वैल्यू 3 होगा, सो 3 into 4 मीन्स टोटल जो मास नंबर है 3 into 4, 3 अल्फा पार्टिकल मीन्स 3 into 4, 12 यूनिट डिक्रीज होगा मास नंबर से एंड दैट विल बी इक्वल टू द मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट. सो हियर b. सिमिलरली if number of beta particle if number of emission of beta particle is y, then c is the atomic number of x. हम लोगों को पता है अगर एटॉमिक नंबर अल्फा पार्टिकल एमिट होने से -2 यूनिट डिक्रीज होता है एटॉमिक नंबर एंड +1 यूनिट ऐड होता है, मीन्स इंक्रीज होता है बीटा पार्टिकल एमिशन से. सो considering when we are considering this mass, there is no change in mass for beta particle emission. So for beta particle emissions only we have to consider the atomic number change. So now c is the atomic number of x, it emits x number of alpha particle. So वन अल्फा पार्टिकल एमिट होने से -2 यूनिट एटॉमिक मास डिक्रीज हो जाता है. इसमें से x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है. सो 2 into x जो नंबर होगा वो डिक्रीज होगा एटॉमिक नंबर से एंड y नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है. बिकॉज वन बीटा पार्टिकल एमिट होने से +1 इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर. दैट्स व्हाई वी राइट हियर y नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिट होने से y into +1 मीन्स y इंक्रीज होगा, प्लस होगा एटॉमिक नंबर में एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट y. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 we can find 4x equal to a minus b, x equal to a minus b by 4. So if this is an element, a is mass, c is atomic number, product y, b is mass, d is atomic number, then the number of in this decay the number of alpha particle emitted by x will be a minus b by 4, means mass number
mass number of parent nuclei minus mass number of daughter product divided by 4. From equation 2, so we can write y equal to d minus c plus 2x. हम लोग जब ये वाला टर्म को राइट साइड लेकर आया, सो नाउ y इक्वल टू d माइनस सी टू, जस्ट यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है, a माइनस बी बाई 4 यहाँ पे पुट कर दिया, सो d माइनस सी प्लस a माइनस बी 2 हो जाएगा. सो y इक्वल टू d, हम लोगों ने प्लस टर्म को आगे लिखा a माइनस बी बाई 2 माइनस सी. सो दिस इज टू इक्वेशंस वी कैन पुट एनीवेयर. ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं कोई भी डीके के लिए नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल फाइंड करने से. नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल कितना एमिट हो रहा है एक डीके रिएक्शन में, वो फाइंड करने के लिए. सो नाउ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड इज a minus b by 4 and number of beta particles emitted is equal to d means atomic number of product plus mass number of mother nuclei minus mass number of product nuclei divided by 2 minus c, that is mass atomic number of parent nuclei. So this is just the formulation of Soddy-Fazan's group displacement law. So ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, हम नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, बट एक क्वेश्चन आ सकता है कभी भी एग्जाम में. सो बार्क एग्जाम में नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड आते हैं. सो इन दिस, so the number of beta particles emitted are, so d plus a minus b by 4 plus c, d plus a minus b by 2 minus c. So this is the number of beta particle emitted in this decay. And if in question में alpha and beta particle दोनों ही पूछ लेते हैं, so alpha particle emission is a minus b by 4, beta particle emission is d plus a minus b by 2 minus c. So only beta particle emission में पूछा, so the correct answer is this. सॉरी, इसमें 1 2 3 4, सो इस ऑप्शन 3 होगा, ये वाला ऑप्शन में ये ऑप्शन 3 होगा. जस्ट आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा. अगर अल्फा एमिशन पूछ लेते हैं, सो अल्फा एमिशन विल बी a माइनस बी बाई 4. हम लोगों ने देखा x इक्वल टू a माइनस बी बाई 4 एंड बीटा पार्टिकल एमिशन इक्वल टू d प्लस a माइनस बी बाई 2 माइनस c. सो दिस ऑप्शन 3, नॉट दिस इज 1, दिस ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर फॉर this decay reactions number of beta particle emissions. So let's move to the next questions. So question 3, this element uranium 92238, so 92 and 238 emits 8 alpha particle and 6 beta particle. इसमें मेंशन कर दिया कितना अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल एमिट हुआ. The n by p ratio in the product nucleus is, so we have to find the neutron to proton ratio in the product nucleus. So हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन के थ्रू ये इसका आंसर निकला. ये आप नॉर्मल वो वाला वो वाला इक्वेशन में यूज करके, सो इसमें से नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिशन दिया हुआ है. So हम लोगों को सिर्फ निकालना है उसका. सो अच्छा, प्रोडक्ट का वो वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो. यूज करके प्रोडक्ट का मास एंड प्रोडक्ट का जो मास है, सो प्रोडक्ट का मास एंड प्रोडक्ट का मास नंबर एंड प्रोडक्ट का एटॉमिक नंबर निकल के हम लोग यूज कर सकते हो वो वाला इक्वेशन यहाँ पे भी. बट यहाँ पे हम लोगों ने पूरा एक ब्रॉड वे थे, हम लोगों ने पूरा लिख के ये सॉल्व किया. इसमें भी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ पूरा यूज किया, जैसे हम लोगों ने वो वाला इक्वेशन प्रूफ का वो वाला जो फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए यूज किया, वो वाला इक्वेशन को ऐसा ही यूज किया. सो इफ वी अज्यूम दैट अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड बाय दैट एलिमेंट, which element uranium 9238, alpha and beta particle emitted are small x and small y. So we have to assume on another thing that also the mass number and the atomic number of final product are
स्मॉल m एंड n। सो हम लोगों ने दो चीज एज्यूम किया। जो एलिमेंट दिया हुआ है यूरेनियम 92 238, उसका हम लोग एज्यूम किया वो अल्फा एंड बीटा पार्टिकल रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिट इमिट होता है उसमें से। एंड आफ्टर एमिशंस जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, so after emission we will get the product. In that product the mass number means a value and the atomic number means z value we consider as m as a mass number and n as a z means atomic number. So according to the group displacement law, initial mass 238 हम लोगों ने कंसीडर किया x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। सो 238 minus 4x, one alpha particle 4 unit decrease by mass, x alpha particle 4 into x unit decrease by mass, and that equal to क्या होगा, प्रोडक्ट का जो मास नंबर होगा। हम लोगों ने कंसीडर कर लिया प्रोडक्ट का मास m, स्मॉल m, so is equal to m. Now 92 is the atomic number, so one atomic number one alpha particle emit होने से एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है -2, एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है 2। सो x अल्फा पार्टिकल एमिट होने से एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा -2 into x। वन बीटा पार्टिकल एमिट होने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है 1। सो y नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिट होने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा y into 1 mean y, and then that will be equal to the product atomic number. Here we consider as n as a product atomic number. So इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो एलिमेंट है इसमें 8 अल्फा पार्टिकल एंड 6 बीटा पार्टिकल एमिट किया। सो हम लोगों ने इसमें कंसीडर किया x and y as a alpha and beta particle emissions. So in the reactions in this equations, if we put value of x means number of emission of alpha particle, x is 8. If we put x equal to 8 and number of emission of beta particle क्वेश्चन में दिया हुआ है 6. So if we put x equal to 8 and y equal to 6, then from these above equations we will get m equal to 206 and n equal to 82. M is equal to mean mass of the product 206 and n is equal to atomic number equal to 82. So the final product is lead 82 206. So in this way हम लोगों ने प्रोडक्ट का मास एंड प्रोडक्ट का एटॉमिक नंबर प्रोडक्ट का मास एंड एटॉमिक नंबर हम लोगों को मिल गया। सो नाउ वी नो मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो इक्वल टू 206, एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 206 minus 82 124. Now the ratio of neutron to proton in the product, so this is the product lead. Now in the product neutron to proton ratio is 62/41. So 62/41. So this is the right answer for this question. So the neutron to proton ratio in the product will be 62/41. I think ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। जस्ट इन एवरी क्वेश्चन ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का मेन जो स्टेटमेंट है वही अप्लाई हो रहा है हर क्वेश्चन में। नॉर्मली ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का जो मेन स्टेटमेंट, मेन जो उसका जो फंड है वही अप्लाई होता है हर क्वेश्चन में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द न्यूक्लियर रिएक्शन x and y are, so this is the reaction given, we have to find the x and y. So it is a simplest question, just we have to each option we have to put in the x and y and we have to find that the mass number. So in the mass number in both in a reactions, in a radioactive reactions, the mass number and atomic number of each element should be equal to the mass number and atomic number of right side. So in the reactions left side means reactant, the mass number, summation of mass number is equal to the summation of mass number of the product. The summation of mass number of the summation of atomic number in the reactant is equal to the should be equal to the summation of the atomic number of the product. So let's see
So for option on hydrogen and magnesium 12 3. So we have to put hydrogen for in place of x and magnesium 2 3 for y. So if we put hydrogen on in place of x and magnesium 12 to 3 in place of y, then see the atomic number in the reactant 11 on 12, the atomic number in product 12 plus 0 12, the mass number in the product 23 plus 1 24, and the mass number in the product 23 plus 1 24. So this is a correct radioactive decay reactions. The mass number, summation of mass number in reactant is equal to the summation of mass number in product. So now option B. So option B, we have to put helium means alpha particle in place of x and aluminium 1327 in place of y. So see the mass number of the reactant 23 plus 4 27, mass number in the product 27 plus 1 28, एटॉमिक नंबर 11 to 13, एटॉमिक नंबर इसमें 13. सो ये वाला ऑप्शन में एटॉमिक नंबर मैच हो रहा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, बट समेशन ऑफ मास नंबर मैच नहीं हो रहा है. लेफ्ट साइड 27, राइट साइड इज 28. So this is not a correct radioactive decay reactions or equations. Now C, option C, hydrogen and magnesium 12 24. So sodium, hydrogen 11 1 12, atomic number 12 plus 0 12, mass number 23 plus 1 24, mass number 24 plus 1 25. So इसमें atomic number मैच हो रहा है left side and right side of the equations, but the mass number is not matching. Left side 24, right side 25. So option D. So option D में deuterium दिया हुआ है hydrogen 1H2 and magnesium 12 23. Let's see. Hydrogen 1H2, mass number 23 plus 2 25, atomic number 11 plus 1 12, atomic number 12 plus 0 12, mass number 23 plus 1 24. So option D में भी atomic number मैच हो रहा है reactant and product का, but mass number मैच नहीं हो रहा है. So only the option A, where the both side, left side and right side, means in the reactant and in the product of the radioactive decay reactions, and the mass number is left side 11 plus 1 12, mass number 23 plus 1 24, mass number 24, atomic number 11 plus 1 12, atomic number 12 plus 0 12. So in the option A, if we put hydrogen in place of X and magnesium 12 23 in place of Y, then A reaction is the correct way to write a radioactive decay reaction. So the correct option is option A. So X equal to 1H1 and Y equal to magnesium 12 23. So option A is the correct option. So these are simple question. So now move to the next questions. So the number of alpha and beta particles generated in the following radioactive decay process are. This is also a simple question. So reactant, mother nuclei and product nuclei दिया हुआ है, हम लोगों को जस्ट इसमें से देख के निकालना है कुछ कितना अल्फा एंड कितना बीटा पार्टिकल ये वाला डीके रिएक्शन में इमिट होता है. हम लोग जस्ट नॉर्मल वो वाला जो फॉर्मूला है उसमें भी वो यूज करके देख सकते हैं और नॉर्मल कैलकुलेशन करके पूरा कैलकुलेशन करके भी ये सॉल्व कर सकते हैं. So according if we assume that number of alpha particle emitted by this mother nuclei is X and a number of beta particle emitted by this mother nucleus is Y, then see 238 minus 4x equal to 234, because reactant में जो मास होगा और प्रोडक्ट में जो मास होगा उसमें दिया हुआ है 234. सो 238 माइनस 4x इक्वल टू 234. हम लोगों ने कंसीडर कर लिया x इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय द मदर न्यूक्लियाई.
so x become 1. Now beta for beta particle, so हम लोगों ने एज्यूम कर लिया ये y नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिट करता है. सो क्या होगा 92 माइनस 2y मीन्स बीटा पार्टिकल एमिट करने से मास एटॉमिक नंबर -2 वन अल्फा पार्टिकल एमिट होने से एटॉमिक नंबर -2 डिक्रीज होता है और 1 बीटा पार्टिकल एमिट होने से एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होता है. so इसमें हम लोग लिख लिया for this is for mass number and this is for atomic number. So in the mother reactant atomic number is 92. For one alpha particle atomic number decreases by 2. For x alpha particle atomic number decreases by 2x. For one beta particle atomic number increases by +1. For y beta particle atomic number increases by y into 1 unit. So plus y and it's equal to also 92. सो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों में एटॉमिक नंबर 92 ही है. सो हम लोगों ने ए लिखा, इसमें से y निकला 2. सो एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1 एंड एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू 2. सो द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इज 1 and 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1 and 2. ये हम लोगों ने पूरा लिख के पूरा इक्वेशन लिख के सॉल्व किया. अगर आप लोगों का वो जो पहला वाला क्वेश्चन था, सॉरी आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन याद है, इसमें से अगर आपको ये दो प्रोडक्ट एंड मदर न्यूक्लियाई दिया हुआ है, उसमें से दोनों का ही एटॉमिक नंबर मास नंबर हम लोगों को पता है. हम लोगों को ये यूज करके a-b/4 एंड d+a-b/4 एंड d+a-b/2 - c ये यूज करके डायरेक्टली अल्फा एंड बीटा पार्टिकल नंबर ऑफ इमिटेड अल्फा एंड बीटा पार्टिकल हम लोग निकाल सकते हैं ये वाला. सो ये है हमारा मदर न्यूक्लियाई, ये है प्रोडक्ट न्यूक्लियाई. सो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने ये एस्टेब्लिश भी किया ये वाला फॉर्मूला. सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल a-b/4. So A equal to 238. Mass of reactant means mass of mother nuclei. B is mass of product nuclei. So A minus B/4. So it's become 1. So number of alpha particle emitted by this decay reaction by this mother nuclei is 1. Now number of beta particle is equal to D plus A minus B/2 minus C. So D is एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई. ए भी हम लोगों को पता ही है, मास नंबर ऑफ मदर न्यूक्लियाई, मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई. एंड सी इज एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई. सो हम लोग इसमें रिएक्टेंट को बोलते हैं पेरेंट और मदर न्यूक्लियाई, एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है आफ्टर डीके उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई. सो if we put the value in these equations, then we will get 2. So in this decay reactions, number of emission of alpha particle and beta particle is 1 and 2 respectively. So the correct option is option A. In these decay reactions, number of alpha and beta particles are emitted 1 and 2. 1 alpha particle and 2 beta particle इसमें ये वाला decay reaction में emit होता है. So next questions. So the total number of steps involved and the number of particles emitted in the spontaneous reactions respectively are. So in this reaction also just we have to find the number of steps. So इसमें हम लोग number of alpha and beta particle कितना emit हो सकता है इसमें ये वाला reaction में, same as the previous questions हम लोगों ने ये वाला डीके रिएक्शन में कितना अल्फा एंड कितना बीटा पार्टिकल एमिट होता है हम लोग निकाल सकते हैं. उसके बाद एक स्टेप में एक पार्टिकल एमिट होता है, सो दो स्टेप में दो पार्टिकल एमिट होता है. मींस साइमल्टेनियसली दो पार्टिकल कभी नहीं एमिट होगा एक ही स्टेप में एक ही पार्टिकल एमिट हो सकता है आइदर अल्फा और बीटा. सो सेकेंड स्टेप में भी कोई एक ही पार्टिकल एमिट होता है आइदर अल्फा और बीटा. एक स्टेप में कभी भी दो पार्टिकल एमिट नहीं होता है, मींस सिंगल स्टेप में अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिट नहीं होता है. सो इफ हम लोगों को मिला ये वाला डीके रिएक्शन में
5 अल्फा 5 बीटा पार्टिकल इमिट हुआ, सो टोटल स्टेप 10 होना चाहिए। 5 अल्फा पार्टिकल इमिट होने का 5 स्टेप, 5 बीटा पार्टिकल इमिट होने के लिए 5 स्टेप, टोटल 10 स्टेप होना चाहिए। एक ही स्टेप में कभी भी 2 पार्टिकल एक साथ इमिट नहीं होता है, एक पार्टिकल एक ही स्टेप में इमिट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई हम लोगों को जितना पार्टिकल इमिट होगा टोटल उसके उसी को ऐड करना होता है to get the steps involved in the emitted particles emitted by the parent nuclei. So this is uranium 92 to 38, that is lead 92 to 206. Let's see. So according to Soddy-Fedon group displacement law, हम लोगों को x means number of alpha particle emitted by this parent nuclei and number of beta particle emitted by this parent nuclei is 8 and 6. सो हम लोगों ने बार बार वो पूरा ये नहीं देखेंगे, आप लोगों को शायद पता ही होगा कैसे ये करते हैं। बस 238 माइनस 4x इक्वल टू 206 सेम कंसिडरेशन हम लोगों ने सेम कंसिडर कर रहे हैं। ये वाला रिएक्शन यूज कर, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोगों को अल्फा x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा। सो इन दिस डीके रिएक्शन टोटल 8 अल्फा एंड 6 बीटा पार्टिकल इमिट होता है। सो सिंस इसमें टोटल 8 एंड अल्फा एंड टोटल 6 बीटा पार्टिकल इमिट होता है, सो ऑब्वियसली टोटल 8 प्लस 6 14 स्टेप होना चाहिए। एक स्टेप में एक ही पार्टिकल इमिट होता है। सिंस ये वाला डीके में टोटल 14 पार्टिकल इमिट हुआ, आउट ऑफ देम 8 आर अल्फा एंड 6 आर बीटा, दैट्स व्हाई ये वाला डीके रिएक्शन में टोटल 14 स्टेप होगा। 14 स्टेप शुड बी देयर, दैट्स व्हाई इन दिस डीके रिएक्शंस 14 स्टेप is involved and the number of emitted alpha particle is equal to 8 and number of emitted beta particle is equal to 6. So in the questions it is asked that the number of beta particles emitted and the steps involved. So steps involved is 14 and number of beta particles emitted is are 6. If they asked steps involved and number of alpha particle emissions, then that will become 14 and 8. So total steps involved is 14 and number of beta particles emitted is 6. So the correct option is B, 14 and 6. If they change the questions, the total number of steps involved and the number of alpha particles emitted by the spontaneous decay, then the answer will be D, means total steps should be 14 and number of alpha particle emitted is 8. So in this case the correct option is B, since they asked only beta particle emissions. So 14 steps and 6 beta particle. So these are easy questions, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो ये वाला एक इक्वेशन है, बस सिंपल क्वेश्चंस। हम लोगों को अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम 24, सो इसमें मैच करना होगा। हीलियम 24 मींस 4 मास 241 मास, सो 241 एंड 4 मींस 245 मास होना चाहिए। इसका जो एटॉमिक नंबर होगा 2 एंड 95, सो टोटल 97। प्रोडक्ट में एटॉमिक नंबर 97 एंड मास होना चाहिए 241 प्लस 4 245। सो अगर हम लोग x में ऑलरेडी 97, x में ऑलरेडी एटॉमिक नंबर 97 है, सो x should be that element which element have 0 atomic number. So C, helium atomic number 2, hydrogen also atomic number 2. So हम लोगों को ये ऐसे एक एलिमेंट कंसीडर करना है जो इसमें एटॉमिक नंबर 0 होगा। सो ओनली पॉसिबल इज न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 है। सो अगर हम लोगों ने इसमें ओनली 1 न्यूट्रॉन पुट कर दिया तो क्या होगा, 97 तो मैच हो गया, 95 प्लस अल्फा मींस हीलियम 24 297 and 4 means 241 plus 4 95. So 97 mass हो गया, but if we put 1 neutron then 243 plus 1 mass number of neutron 1, then it's become 244, but in the left side the mass is 245. So if you put 2 neutron then the atomic number will be same 97, but since there is 2 neutron, so
इन द मास नंबर 243 प्लस 2 इंटू 1 2 ऐड होगा, सो 243 प्लस 2 245 हो जाएगा. सो दिस इज द एग्जैक्ट इक्वेशंस. So 241 plus 4 245, 95 plus 2 97, 97 plus 0 97, 243 plus 2 into 1 means 245. So the correct option is option A. इसमें 2 न्यूट्रॉन पुट करना है हम लोगों को. So thank you guys, thank you for watching. I feel ये रेडियो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया ये लोगों को हेल्प करेंगे. सो टुडे इज डेट 31 मार्च. सो 2 अप्रैल में फर्स्ट फेज केमिस्ट्री का बार्क एग्जाम है. सो दिस वीडियो ओनली फॉर बार्क स्पेशल. नॉर्मल सीएसए नेट गेट में उतना क्वेश्चन नहीं आता है जो रेडियो एक्टिविटी का, बट बार्क एग्जाम में बहुत सारा रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेते हैं. सो दिस इज फॉर बार्क स्पेशल video and from radioactivity chapter. So I believe that this video will help you a lot who are preparing for BARC exam. So thank you again for watching. So stay safe, stay healthy. So we will upload lots of questions after BARC exam. Now for a little suggestions, जो आप लोगों ने पढ़ा इतने दिन तक उसका प्रैक्टिस करिए. लास्ट मीन्स 2 दिन बाकी है. सो फर्स्ट फेज ऑफ बार्क एग्जाम. सो थोड़ा प्रैक्टिस करिए और मैक्सिमम रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए. थोड़ा थोड़ा देख लीजिए और ऑर्गेनिक क्वेश्चन का कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो थोड़ा देख लीजिएगा. बाकी फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए. chemical kinetics, electrochemistry and from ionic equilibrium. So ये दोनों फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर में से फॉर्मूला याद होना चाहिए. सो एटलीस्ट एक बार पूरा फॉर्मूला जो होता है वो एक बार प्रैक्टिस करके कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करके कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करके रहिएगा. तो ऐसे थोड़ा याद रहता है ज़्यादा फॉर्मूला. So all the best for upcoming BARC exam. So thank you. Stay safe, stay healthy.